Hello guys, hi, how are you? I am really excited to shoot this video because I just want to thank you all guys for the support and the love you have given to my channel, and I'm really grateful and lots of love to you and stay blessed. So in this video I'm basically getting ready with the things which I already have, which you guys already have, and you don't know how to use them, and you don't know how to, you know, look glam with that, with the same. And I also want to mention here that people say this is in trend and this is not in trend, but I really don't follow that ethics because किसी book में नहीं लिखा है, and we don't have to follow the rule book. ओके ये कोई गेम नहीं चल रही है, सो गेम्स में ही रूल फॉलो करना होता है, रियल लाइफ में कोई रूल्स नहीं होते हैं. आपने अपने रूल्स खुद बनाते हो और खुद ही तोड़ते हो और खुद ही सब कुछ करते हो, डैश डैश डैश. ओके सो तो मैं ट्रेंड के साथ तो बिल्कुल ही चलती हूँ, जैसे कि मैंने मेंशन किया. एंड सेकेंड थिंग ये है कि हम रेडी होंगे आज, ओके, फॉर द थिंग आई एम गोइंग आउट, ओके, फॉर समथिंग, फॉर द सेलिब्रेशंस. एंड तो देखते हैं मैं कैसी लगती हूँ. एंड दिस इज़ माई फर्स्ट लाइक फुल वीडियो एंड विच आई एम शोकेसिंग एवरीथिंग, लाइक ड्रेस टू मेकअप टू ज्वेलरी. एंड इसमें बहुत सारे टिप्स भी हैं जिसके मैं आपको बता सकती हूँ कि लाइक किस चीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं. ओके एंड मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करूँगी जो कि किसी के पास नहीं होती. एवरी वन हैव. ओके, so let's get started. So yes guys, this is the dress which is from Tokyo Talkies, and I have never wore this. Okay, तो ये मैं पहन रही हूँ आज. This is the color because we are going at night, so I just want to be wear dark today. Okay, so ये पहनते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे लग रहा है और उसके साथ कैसा मेकअप एंड कैसी ज्वेलरी एंड हाउ यू कैन स्टाइल. एंड इस चीज़ का मैं स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, जस्ट फॉर श्योर कि मैंने उतने की ही लिया भाई, ड्रेस ज़्यादा महंगी नहीं थी. ओके, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर अ बिग रीज़न, ओके, कि मैं ये वाली ड्रेस क्यों पहन रही हूँ. दिस इज़ वेरी नॉर्मल एंड कॉमन. पहली बात तो जहाँ मैं रहती हूँ चंडीगढ़ मोहाली. ओके, सो आई फाइंड हेयर कि पीपल ना बहुत ज़्यादा चेकआउट करते हैं एक दूसरे को, एंड जो बंदा अच्छा लग रहा होता है ना उसको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करा देते हैं, बिकॉज आई हैव डन सो मैनी शूट्स एंड एवरीथिंग. सो मुझे तो अनकम्फर्टेबल फील कराते ही हैं. सो इसीलिए मैंने सोचा कि ये पहन के तो मैं कहीं भी घूम सकती हूँ एंड पीपल मुझे कम अनकम्फर्टेबल फील कराएंगे. ओके, आई डोंट नो व्हाट्स द मेंटालिटी, बिकॉज उनकी लाइफ में सारे फन ख़त्म हो चुके होते हैं, इसीलिए उन लोगों को घूर रहे होते हैं कि ये बंदा इतना एंजॉय क्यों कर रहा है. ओके, सो आई डोंट रियली वांट टू बी अनकम्फर्टेबल ऑन माई साइड, सो इसीलिए मैंने ये वाली ड्रेस चूज़ करी है, विच इज़ वेरी सॉबर, बट आई विल मेक इट fab. Okay guys, stay tuned. First come first, I am done with my dress. Okay, so let's start with the makeup now. Okay, तो मैंने पूरी तैयारी कर ली है रिबन शिबन डाल के. So let's start. Again, I want to tell you one thing guys, when it comes to makeup, it's all your skin. जैसे कि हमारा डीएनए किसी के साथ मैच नहीं करता, आई का कलर किसी के साथ मैच नहीं करता, तो हमारी टेक्निक्स एंड सेम प्रोडक्ट्स मेकअप कुछ भी मैच नहीं करेगा. सो दोज हु गो विद द टेक्निक ऑफ अदर, आई डोंट थिंक इट्स रेलिवेंट, बिकॉज मैं किसी की टेक्निक यूज़ नहीं करती, बट मैं सिर्फ अपनी टेक्निक यूज़ करती हूँ. अच्छा हो गया, बुरा हो गया, ठीक है. So yes, first come first, prepping is very important. Okay, and I also consider my these areas. Okay, so थोड़ा सा सुखा लेते हैं. Moisturizing. Okay, moisturizing is very important in terms of your full makeup. Okay, so moisturizing इतना अच्छे से करना है कि आप इसको like probably so I'll go with this also. Okay,
सो मैं SPF ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई स्किन with SPFs my skin look darker. Okay, so I don't prefer using it. Doing eye makeup. Okay, पहले तो मैं थोड़ा सा फाउंडेशन लूँगी for my shade and I'll just apply on the upper eye. आई मस्ट लुक बेटर. तो मुझे हमेशा आई के बाहर अच्छा लगता है लाइक आई शेडो. दिस इज़ माई पर्सनल काइंड ऑफ प्रेफरेंस. सो उसके बाद ब्लेंड 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 ब्लेंड. So I'm done with my eyes. Next I use orange concealer. Okay, and ये मुझे जनरली डैबिंग मोशंस में ही लगाना पसंद है. कम्स टू फाउंडेशन, ठीक है. अब मुझे इसको ऐसे लेके I just like it to tap it on. See, makeup is all about your personal thing. Okay, nobody can tell, okay, that look good and that's not look good. It's all about your personal thing. I again and again say to everyone that might be कि आप किसी और की तरफ देख के and कर रहे हो, मेकअप लगा रहे हो, बट when it comes to you, आप नहीं अच्छे लगे हो इसमें, ठीक है ना. तो आपको बेसिकली अपनी स्किन में थोड़ी सी रिसर्च करके इफ़ यू लाइक इट तो थोड़ा सा आपको इसमें चेंज लेके आना पड़ेगा. ओके, सो फिर ही आपको पता लगेगा कि लाइक आपकी स्किन के ऊपर क्या सूट करता है और क्या नहीं सूट करता है, ठीक है. So you only have to understand that thing, that what suits you and what not. Is here, 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 and here. Yes, yeah. So then after that, क्योंकि मैं अपनी स्किन पे पाउडर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज आई डोंट थिंक पाउडर इज़ गुड. लाइक उससे एक तो मेकअप जम जाता है एक जगह, ठीक है. अगर आप चाहो फिर भी उतार नहीं पाते हो. एंड सेकेंड थिंग, फॉर माई स्किन इट रियली लुक्स केकी एंड ग्लो तो बिल्कुल नहीं शो होता है. सो दैट्स वाई आई डोंट प्रेफर केकीनेस एट ऑल. ओके, सो अभी आपको मेरा मतलब फेस बहुत ही अजीब लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है. रियल में इतना नहीं लग रहा बट कैमरा पे कुछ ज़्यादा लग रहा है, बट इट्स ओके. आई विल गो विद द कंट्रोलिंग नाउ. ओके, सो कंट्रोलिंग ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू योर फेस साइज, अकॉर्डिंग टू योर फेस फीचर्स, व्हाट यू वांट टू हाईलाइट प्रेफरेबली. और मैंने ये चीज़ देखा है कि कंटोरिंग ज़्यादा लोग करते नहीं हैं बट इट रियली ब्लेंड्स यू आउट. एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. गोइंग विद द ब्लश. ओके, तो ब्लश आपके आई शेडो के साथ बिल्कुल मैच करना चाहिए. एंड विद योर लिप्स टू. ओके, सो आई टेक दिस मच. ओके, सो आई टेक सम मोर. एंड ऑलवेज कीप योर ब्रश from this to this. Smile and blush. Next
is your highlighter? Okay, when it comes to highlighter, it depends. You are going somewhere in day, okay, or at night. So I'm going at night only, so I'm using this highlighter. This is night. This is red color. So yes. So I'm going to say. So फाइनली मैंने फकअप को कर लिया है ठीक. ऑफ कैमरा किया है, पता नहीं कैसे किया है, बट समझ जाओ भाई. ठीक है. और क्या है so when it will be dried up, okay, we will apply it again. Okay, तो ये बहुत हो गया मेकअप. ठीक है. So let's go with the hair. So मैंने कर्लर आइनिंग के लिए छोड़ दिया है अभी के लिए. So for the बाजू के लिए कुछ पहनना है तो मैंने अपना नेकलेस को ब्रेसलेट बना लिया. वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ब्रेसलेट्स है बिकॉज आई हैव माई ब्रांड. थोड़ी सी प्रमोशन कर लेती हूँ अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो. ठीक है. बट मुझे ये था कि मैं ऐसा आपको जैसे बताया था कि मैंने लुक क्रिएट करना है, तो उसके हिसाब से मैंने ये ब्रेसलेट चूज़ किया विच इज़ लुकिंग गुड एक्चुअली. बाद में मैं दिखाऊंगी पूरा लुक. इयररिंग्स पहन रही हूँ मैं दिस वन. ओके, ये पता नहीं कितनी सदियों पुराने हैं. ये आपके पास पे से पड़े रहते होंगे. तो यू आर द वन हु हैव टू फिगर आउट द थिंग कि आप किस किस चीज़ के साथ क्या क्या सूट कर रहा है. ओके, सो येस इट्स लुकिंग ग्रेट एंड मेरे हेयर कट के साथ भी सूट करेंगे. So yes, I'm considering this one only. So yes guys, कुछ हुए हैं गर्ल. और वैसे भी मेरे आ नहीं रहे थे बाल हाथों में. Okay, so this much I can only do. Okay, I think it's looking sleek and good at the same time. So I am satisfied with that. And मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पिक भी ली. It's very mandatory that your jewelry and footwear must match. Okay, ये भी मेरे फुटवेयर खुद के नहीं है, मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे दिए थे. ठीक है. और अभी तक मेरे पास ही हैं. So I'm using them. So with my footwear, my bag is matching and this is my